Welcome back to Stock Explorer once again. It's been a while, almost a week. I hope you all enjoying the Diwali parties and doing a little bit of learning as well. Recently, market corrected, as we all know, and as I mentioned earlier, with few other stocks. I have another stock for today's session. We'll talk about that quickly, but before that, about markets today, the Nifty tried to jump a little bit from 24,300 to 24,400 above level, but couldn't sustain and went down. So right now, market looks still weak. We are waiting for the result of US elections. 8 तारीख को हाँ US में elections हैं. So hopefully um, the elections will turn out better for us if Trump wins. As you all know, he's a capitalist, and it's better for the economy for both worlds, US and India. And if it not, then China will be trying to overcome everyone if Kamala Harris will win. So let's see what happens. But before that, um, don't try to grill me on my political decisions or ideas. It's each and everyone's personal opinion. So I keep my personal opinion. So don't try to grill me for that. Today, what we're going to talk about is the Varun Beverages Limited, what this company do and what is their competitive advantages, why we should look into this company, and how they try to earn. So there are a few things we're going to talk about, and we'll start right away. Okay. So Varun Beverages. I'm not sure whether you know about this company. The company start की थी Mr. Jaipuria ने, and he named that company after his son. This company after his son. So before Pepsi, Coca-Cola India में आई थी. Just to give a quick history about the carbonated drinks, what happened during liberalization, 91, Coca-Cola came, and before that, actually it came, and it wasn't a successful carbonated drink in India. So Coke decided to go back from India. So Coke ने India को छोड़ा, and Varun Beverages were doing bottling for Coke back in the days, in 80s, and right after that they started doing bottling for Thumbs Up and Campa Cola. And when Pepsi came in 91, so they were actually doing bottling पहले से कर रहे थे. So Pepsi ने देखा कि ये already bottlers हैं, they approached Varun Beverages and they started doing bottling. So basically Varun Beverages is a company founded by Mr. Ravi Jaipuria. Ravi Jaipuria is the founder of the company, and he named this company Varun Beverages after his son. His name was Varun, so Varun Beverages came. Mr. Ravi Japuri also has a daughter. Her name is Devyani. So the other company is named after his daughter. It's Devyani International, जिसके अंदर Pizza Hut and Costa Coffee के जैसे brands आते हैं. So दोनों के लिए अलग अलग food and beverage का business ready है. For Varun, it's the beverages, and for Devyani, it's and there are other more businesses for under Mr. Jaipuria. These are the major two listed ones which we know. RG Corp के नाम से कंपनी है. But before we talk about the family, let's talk about the company. Varun Beverages Limited has been associated with PepsiCo since 1990s. Is a key player in beverage industry and one of the largest franchisee of PepsiCo in the world. In the world, guys. So I will just repeat once again. In the world, this is the second largest bottler in the whole world. So this is a company which is talks in volumes because दूसरी कंपनी है पूरी दुनिया में जो सबसे ज़्यादा बॉटल्स बनाती है किसी भी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स की. द कंपनी प्रोड्यूस एंड डिस्ट्रीब्यूट्स अ वाइड रेंज ऑफ कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड नॉन कार्बोनेटेड ड्रिंक्स. ब्रांड्स जो केटर करती है वरुण बेवरेजेस इज ब्रांड्स के अंदर पेप्सिको के ब्रांड्स आते हैं. पेप्सी, ट्रॉपिकाना जिसके जूसेस आते हैं, स्लाइस, एट अप, स्टिंग. स्टिंग की भी अलग theory. We'll talk about that some other day because Sting की वजह से the amount of market cap and the money which this company has started generating along with Coke is staggering. Like Sting ने क्या करके दिखाया है, you need to read about Sting. Aquafina पानी का जो ब्रांड है मिनरल वाटर का. लिप्टन की आपने देखी होंगी आइस टीज आती हैं बॉटल पैकेज बॉटल में. डोरिटोस के नाचोस वाले चिप्स के पैकेट, मिरिंडा,
फ्रीटो लेस, लेस के भी जितने भी आप चिप्स देखते हैं उसको भी ये वरुण बेवरेजेस पैक करता है। इनके खुद के ओन ब्रांड्स भी हैं जिसमें एक जाइव है, कू है, रिबूस्ट है, क्रीम मिल्क के जो शेक्स आते हैं मिल्क के वो हैं, एक्वा क्लियर है, एंड रिफ्रेश करके है। ओके। सो ये इनकी साइट है वरुण बेवरेजेस की। दे ऑल्सो गॉट द बॉटल ऑफ द ईयर अवार्ड इन 2022। मेजर इनके जो प्रोडक्शन है वो इंडिया में है, नेपाल, श्रीलंका एंड साउथ अफ्रीका। These are the countries which they have covered. We'll look into their presentation now. Okay, this is the investor presentation. Okay, quick idea for you all, which all brands they cater. So as I mentioned, in carbonated drinks, Pepsi है, Pepsi Zero है, Mountain Dew है, Mirinda है, Seven Up है, एट अप, सेवन अप, क्लब सोडा में एवरेस्ट है एंड ड्यूक्स, probably you might have seen Dukes, Tropicana Delight, Slice, Nimbus, all the famous brands like आपने देखे होंगे अपने हर एक जनरल स्टोर्स में दिखते हैं। एनर्जी ड्रिंक्स में स्टिंग विच इज competing with मॉन्स्टर ड्रिंक एंड रेड बुल, तो इंडिया का ये रेड बुल का ब्रांड है एंड इट हैज़ अ ग्रेट मार्केट। रॉकस्टार एक ड्रिंक है इनकी। गेटोरेड की पैकिंग करते हैं, एनर्जी ड्रिंक विच इज़ वेरी फेमस इन यूएस एंड यूरोप, सो उसकी बॉटलिंग करते हैं इंडिया में। एंड कार्बोनेटेड जूस पेस्ट ड्रिंक्स, आपने नींबूस का वो देखा होगा, मसाला सोडा आता है छोटा सा, 15 रुपये का आता है, उसकी पैकिंग करते हैं। लिप्टन की आइस टीज, एक्वाफिना वाटर एंड एक्वावेस। स्नैक्स में दे ऑल्सो डू फॉर फ्रीटो लेस, डोरिटोस, सिम्बा विच इज़ इन साउथ अफ्रीका, आई वाज जस्ट चेकिंग सिम्बा क्या है, एंड कुरकुरे अपना इंडिया में। सेम थिंग विद द डेयरी बेस्ड क्रीम बेल्ट के जितने भी मिल्क शेक्स आते हैं वो ये पैक करते हैं। सो बेसिकली इनका मेन काम है पैकेजिंग करना। कोक वहाँ से अपना कंसनट्रेटेड लिक्विड भेजता है, ये यहाँ पे उसमें वाटर कार्बोनेशन डाल के पेट बॉटल्स बना के पैक करके लेबल करके मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सो कोक का काम सिर्फ कंसंट्रेशन देने का है। इट्स बीन 32 years टुगेदर वर्किंग विद कोक। कोक और वरुण बेवरेजेस दोनों आपस में, मैं ये ओपन कर लेता हूँ आपके लोग तो इजी रहेगा। वरुण बेवरेजेस, एंड इसका कलर भी आपके लिए चेंज कर देता हूँ, सो आई मेक इट मोर प्रोमिनेंट, ग्रीन। ओके। एंड पेप्सी एंड कोक आर टुगेदर विद 32 years, 32 साल से साथ में है इन एग्रीमेंट टिल 2039. They are right now, they renewed actually in 2018, I think, until 2039. So another agreement. So 2040 तक तो पेप्सी का काम तय है इंडिया के लिए। 90% of the Pepsi India sales comes from Varun Beverages. प्रोडक्शन फैसिलिटी वरुण बेवरेजेस प्रोवाइड करता है, ट्रेडमार्क कोक प्रोवाइड करता है, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन जितना भी कोक का है वो वरुण बेवरेजेस देखता है। एक एक किराने के स्टोर में पहुंचाना, एक एक गांव के अंदर ले जाना, वो वरुण बेवरेजेस का काम है। फॉर्मुलेशन कंसंट्रेशन देने का सॉरी, थोड़ा सा गला खराब हो गया आजकल दिवाली गेट टुगेदर में यही होता है। ऑलराइट, ज़्यादा कोक हो रही, डोंट थिंक मच, आइस कोक हो रही है। सो वरुण बेवरेजेस इन आउटलेट मैनेजमेंट में वीसी कूलर्स आपने देखा होगा, जो छोटे जनरल स्टोर होते हैं, कोक की मशीन लगी होती है या फिर पेप्सी का फ्रिज होता है, उसके अंदर आप बाहर खड़े होते हैं, लेने कुछ और जाते हैं, आप फ्रिज के अंदर देखते हैं चिल्ड पेप्सी है, एक छोटी पेप्सी ले लिया, स्टिंग ले लिया, नींबूस पी लिया। तो वो एक कस्टमर अट्रैक्शन को सामने दिखाने के लिए बाहर रखा जाता है, वो वीसी कूलर्स प्रोवाइड करते हैं लोग। प्रोडक्ट एंड पैकेजिंग इनोवेशन थ्रू इन्वेस्टमेंट इन R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट जितना भी होता है, बॉटल के डिजाइन, बॉटल के ऊपर क्या लोगो डालना है, फीफा का डालना है कि नहीं डालना है, अभी दिवाली के सेलिब्रेशन के क्रैकर्स डालने कि नहीं डालने हैं, सो अलग अलग फेस्टिविटीज के हिसाब से, ओकेजन के हिसाब से वो कोक बताता है इन लोग को कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। सेम थिंग कंज्यूमर पुश मैनेजमेंट, ये आपका करता है वरुण बेवरेजेस, एंड कंज्यूमर पुल मैनेजमेंट करता है आपका पेप्सी। तो बेसिकली क्या बात है ये, कि जितना भी कंज्यूमर को बुला, एडवर्टीजमेंट दे के, एड दे के कंज्यूमर को अपने ब्रांड की ओर खींचना। यू मस्ट हैव सीन कि इन लोगों का कोक एंड पेप्सी के एड्स दे ऑलवेज कंपीटिंग विद ईच अदर। तो जो कंज्यूमर को पुल करने की ताकत है, रणबीर कपूर के ऐसे एड्स आते थे, तो वो पेप्सी का काम है। बाकी यहाँ पे इनका काम क्या है वरुण बेवरेजेस का,
कि आगे हर मार्केट सेगमेंट में प्रोडक्ट को रखें, पुश करें। पुल वो करेंगे कि भाई तुम ऐड देख के आओ पीने, डाइट कोक पियो उसमें शुगर कम है, कोक जीरो पियो उसमें बिल्कुल भी शुगर नहीं, कैलोरी फ्री है। तो वो सब चीजें पेप्सी का काम है। प्रोडक्ट को बाहर लेके मार्केट में रखना वो वरुण बेवरेजेस का काम है। ओके, सो विल टॉक अबाउट देयर बिजनेस मोर। ओके, एज ऑफ Q1 विल जस्ट, एक सेकंड, चार्जिंग खत्म हो गई, चार्जिंग पे लगा देते हैं। As of Q1 25, the operation spans in 10 countries, 10 कंट्री में अलग अलग इनका ऑपरेशन है, विथ फ्रेंचाइजी राइट एंड 4 कंट्रीज विद डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स। तो ये आपको मैं मैप पे दिखाता हूँ, जहाँ जहाँ इनके पास फ्रेंचाइजी राइट्स है और जहाँ जहाँ इनके पास डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स है। तो ये आप देखिए इंडिया का मैप है, ठीक। होल इंडिया में आप जहाँ जहाँ पेप्सी का लोगो देख रहे हैं वहाँ वहाँ इनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है। So number of manufacturing facilities in India is massive. Like almost in every state, maybe one or two there are manufacturing facility. जितना भी अभी लाइट ब्लू देखने से नेपाल में इनके इंटरनेशनल टेरिटरीज है, बट वहां पे भी इनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है। और जितना भी अभी ये अलग कलर देख रहे हैं, लाइट कोरल ग्रीन कलर, वहां पे इनकी है ओनली डिस्ट्रीब्यूशन राइट। तो वहां पे सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। इंडिया में तो हर जगह मैन्युफैक्चर भी कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन भी कर सकते हैं। जैसे अफ्रीका में इनकी आप देखिए लाइट कलर से, मोजाम्बिक में, मेडागास्कर में, दे कैन ओनली डू डिस्ट्रीब्यूशन, वहां पे वहां मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे, बट दे आर डूइंग मैन्युफैक्चरिंग अदर अदर पार्ट्स ऑफ अफ्रीका, लाइक इन साउथ अफ्रीका, इन एस्वातिनी, इन जिम्बाब्वे, इवन ऑफ फॉर लेज, लेज भी वहीं मैन्युफैक्चर हो रहा है। सो आप ये देखिए मैसिव ग्रोथ एक्सपेंशन किया उन्होंने फ्रॉम 2018 अंटिल 2024। सेल्स में 21% का कैगर्ड ग्रोथ हुआ है, 21% कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ हुआ है सेल्स में। वॉल्यूम स्केल्स का काम है, जैसे जैसे ग्रो होते जाएंगे वैसे वैसे इनकी प्रॉफिट्स बढ़ते रहेंगे। विल क्विकली गो थ्रू ऑल द अदर थिंग्स। So in March 24, they consolidated the franchisee territories of South Africa, Estonia, and territories with distribution rights in Namibia and Botswana. जो आपको मैंने दिखाया कि they started doing manufacturing in other places, and they also got the power to distribute in Madagascar and all the other states, countries in there. Robust distribution network, guys. VBL Varun Beverages has 36 manufacturing facilities in India. 36, हर स्टेट में जितने हैं बोलते उससे ज़्यादा ही निकले। एंड 12 इंटरनेशनली, 12 बाहर इनकी। इट हैज़ अ रोबोस्ट सप्लाई चेन विद 130 प्लस ओन डेपोज, 130 खुद के डेपोज हैं ओन्ड। 2500, 2500 ओन्ड व्हीकल्स, जितने भी ट्रक्स जिससे ट्रांसपोर्ट करते हैं खुद ओन्ड है। 2500 प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूटर, जो मेन इनके होल एंड सोल मेन डिस्ट्रीब्यूटर होता है, उसके नीचे सेकंड डिस्ट्रीब्यूटर वो होते हैं। 2500 इनके प्राइमरी है। एंड करंटली इंस्टॉल्ड 10.2 करोड़, 10 करोड़ से ज्यादा वीसी कूलर्स इन्होंने इंस्टॉल किए हैं, जो जनरल स्टोर्स में आप देखते हैं। रोबोस्ट नेटवर्क गाइस, द स्ट्रॉन्ग नेटवर्क हैज अ रीच टू एवरी फिफ्थ पर्सन इन द वर्ल्ड। दुनिया के हर पांचवें बंदे तक इनका प्रोडक्ट पहुंचता है, ऐसा इनका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है। और इतने स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन चैनल किसी कंपनी को compete करने में ऑटोमेटिकली एक डिसएडवांटेज तो होगा। कोई नई कंपनी आएगी, इट वोंट बी एबल टू रीच दैट डीप इनटू ऑल द प्लेसेस लाइक द वीबीएल ने जैसे किया है। वीबीएल के पास ये बहुत स्ट्रॉन्ग फर्स्ट मूवर एडवांटेज है कि उन्होंने बहुत पहले स्टार्ट किया था, एंड दे हैव अचीव्ड वेरी इन डेप्थ। जैसे एशियन पेंट के पेंट को कोई नहीं compete कर सकता, वैसे वीबीएल के डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को कोई compete नहीं कर सकता। कर सकता है, but it will take a lot of time, and in that time people will become more stronger automatically. तो इसके अंदर बैरियर टू एंट्री बहुत स्ट्रांग है। मतलब कोई नया ब्रांड कितने भी फंडिंग से आएगा, पर इस सेक्टर के अंदर बैरियर टू एंट्री बहुत कम है। 90% बॉटलिंग होती है इंडिया के अंदर, वो वरुण बेवरेजेस करता है। बाकी 10-12% जो होती है वो कोक की होती है, वो दूसरा ब्रांड करता है। मतलब कोई कंपटीशन है ही नहीं। तो जितने भी मैं केस स्टडीज ला रहा हूँ या फिर स्टॉक्स को एनालिसिस कर रहा हूँ, दे हैव वेरी स्ट्रॉन्ग एडवांटेजेस ओवर अदर कंपनीज। ओके, सेल्स वॉल्यूम ग्रोथ का ब्रेकअप देखिए तो सीएसडी मतलब कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स 76% इनका वहीं से आता है। 8% आता है इनका जूसेस से, जो ट्रॉपिकाना के हैं, नींबूज वाले हैं, जूसेस से। 16% वाटर अपना एक्वाफिना एंड एक्वावेस्ट से आता है।
सेल्स ग्रोथ grew by 28%. 28% से सेल ग्रोथ हो रही है, which includes 28 million cases from Bev company during the quarter. So Bev company is the other company which they acquired in Africa for 13,000 crore. We'll talk about that. बैकवर्ड इंटीग्रेशन मतलब कंपनी ने अपने आप को खुद के ऊपर बना लिया है, किसी से उनको रॉ मटेरियल लेने की जरूरत नहीं पड़ती पीछे से. तो कंपनी हैज एस्टैब्लिश्ड बैकवर्ड इंटीग्रेशन फैसिलिटी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ प्री फॉर्म्स, क्राउन, प्लास्टिक क्लोजर्स, corrugated boxes and pads, plastic crates and shrink wrap films in certain facility to ensure operational efficiency. So जितने भी बॉटल बनाने के चीज़ें चाहिए होती थी, उनको कैप चाहिए होते थे, क्राउन कैप चाहिए होते थे जो कोक के, वो खुद ही मैन्युफैक्चर करने लग गए. तो इनको किसी से सोर्स करने के लिए नहीं जाना पड़ता है, एंड इट सेव्स not much but a small amount of money which when comes in volume it affects a lot. तो वहां से इनको एडवांटेज आने लगा. द कंपनी ऑल्सो ओन 55% स्टेक इन ल्यूमनाक टेक्नोलॉजी विच प्रोड्यूस एंड सेल्स पेट बॉटल. तो उनका 55% स्टेक तो उन्होंने बॉटल कंपनी का भी खरीद लिया, तो आधी कंपनी तो खुद ही खरीद ली है. पेट रिसाइकलिंग, ये पेट रिसाइकलिंग भी करते हैं. कंपनी यूजेस 66 मिलियन टन ऑफ पेट रेजिन एज पैकेजिंग मटेरियल फॉर इट्स फिनिश प्रोडक्ट्स एनुअली. इट हैज एंगेज विद जेम एनवायरमेंट मैनेजमेंट. तो रिसाइकलिंग भी करते हैं. स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद पेप्सिको, 32 साल का रिलेशनशिप है, 32 ईयर्स का. इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप गाइस. आप कभी बार सोचते होंगे कि व्हाट इफ दिस, एक वरुण बेवरेजेस का काम तो सिर्फ पेप्सी की बॉटल बनाना है. व्हाट इफ पेप्सी डिसाइडेड टू गो बैक एंड और नॉट गो बैक, मे बी से कि भाई आई हैव फाउंड अनदर चीपर बॉटलर, यू स्टॉप डूइंग इट. तो ऐसा तो नहीं होता है ना, बिकॉज देयर इज कॉन्ट्रैक्ट एज आई शोड यू. 2039 तक तो इनके पास कॉन्ट्रैक्ट है. And even if somebody else comes in to start manufacturing, they won't be able to match the pricing. तो इनके पास हर चीज में एडवांटेज ही एडवांटेज है. बिफोर they were only doing 27-25% of the sale of Pepsi, and now they are doing 90% of the sale of Pepsi. So Pepsi ऐसे strong player को तो जाने नहीं देगी. And I was just checking like what was the result and how much revenue Pepsi made. Pepsi made in the quarter 219 crores का profit, and you won't believe it, Varun Beverages made 2,000 crore of profit. So more than the company, the bottler is making it. So ऐसा कुछ नहीं हो. वैसे भी बॉटल भी बनानी है, कोई और ब्रांड आएगी तो उनकी भी बनाई देगी. सो उसमें ये जीती गई ऑटोमेटिकली. Expansion. On December 23, the company laid the foundation stone of its processed manufacturing plant in Kangra with a capex of capital expenditure of 270 crore. 2023 में. 2023 में एक और झारखंड में इन्होंने फैसिलिटीज बनाई 450 करोड़ की. कंपनी ने 2450 करोड़ का एक ग्रीन फील्ड प्रोडक्शन फैसिलिटी सेटअप किया. मतलब ऑलमोस्ट अंडर डेवलप्ड या एग्रीकल्चर लैंड में इन्होंने 2400 करोड़ का सेटअप किया महाराष्ट्र में, गोरखपुर में एंड उड़ीसा में, विच इज़ नाइस. कंपनी के ग्रोथ प्लान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है ग्रीन फील्ड प्रोडक्शन. वहाँ से आप प्लान करके अलग अलग सेक्टर, अलग अलग एरियाज में ग्रोथ भी कर सकते हो. एक पहले की कंपनी बनी हुई, काफी रिस्ट्रिक्शंस होते हैं. In Quarter 2, we will commission a new production facility at Bundi, Rajasthan, and Jabalpur, Madhya Pradesh, as well as expand its capacity at 6 existing locations. Brownfield expansion in Morocco for rupees 250 crore, including backward integration. Integration. इन Quarter 1 कंपनी स्प्लिट द, हाँ जी, अभी इस साल इन्होंने अपनी कंपनी के शेयर्स भी स्प्लिट किए हैं रिसेंटली. तो 1:2 किया है. वन शेयर को दो हिस्सों में डिवाइड किया विद फेस वैल्यू ऑफ 10 टू फेस वैल्यू ऑफ 5. तो इजी हो गया, मोर लिक्विड हो गया है सबके लिए ये शेयर्स के अंदर खरीदना बेचना. एक्विजिशन किया है साउथ अफ्रीका में. द बेवरेज कंपनी लिमिटेड साउथ अफ्रीका अलॉन्ग विद इट्स होली ओन सब्सिडी बेवरेज काउंट, जो आपको मैं बोला था 13,200 करोड़ में खरीद ली है. तो पूरी पूरी कंपनी खरीद ली है साउथ अफ्रीका की, और वहाँ पे भी ये लोग अपना बॉटलिंग कर रहे हैं. और डिस्ट्रीब्यूशन राइट इनको मिला है मोजाम्बिक एंड जोहान्सबर्ग एंड मैडागास्कर में. VPL has entered into exclusive franchisee agreement with PepsiCo to manufacture, distribute, and sell Simba Munchies. क्या है ये? It's a kind of a snack which is famous in South Africa. इसका भी इनको मिल गया है to do it in Africa. Apex.
VBL has spent 1200 crore on capex in calendar year 24 and 600 crore in calendar year 25. Acquired Bevco company for 1163 crores, payment for equity and loan takeover, and net debt has increased only 1150 crore, which is fine. Now let's check the company's chart and what are they doing. So market cap है कंपनी की 1,96,000 crores. The big company, guys, big, among the top 4 5 companies in the Indian stock market. Let's go down. FMCG sector में it's the most valuable company, 1,96,000 crore. The second company is Hudson Agro, जो कि है 23,000 crore की. डिफरेंस देख रहे हैं, ऑलमोस्ट 8 टाइम्स 9 टाइम्स का है फर्स्ट एंड सेकंड में. PE ऑब्वियसली एक्सपेंसिव होगा बिकॉज इट्स वेरी बिग कंपनी, एंड ऑल्सो उसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बहुत सॉलिड है, वो भी हम लोग देखेंगे. नाउ विल गो डाउन टू ROC. 28% का ROC है, 28% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है. ROE है 35 का. मतलब अगर आप 100 रुपीज डालें तो यू ऑलमोस्ट गेटिंग 130 by the end of the year. Now let's compare with all the whole sector. Who is giving that kind of return? One company here which says BKG Food. BKG Food, will talk about that one day as well, because BKG Food is recently doing a lot of acquisition in all the small tier 2 and tier 3 cities. And what are the growth plans which they have mentioned in the recent plan which they have mentioned? We'll talk about that. But look at the ROE, no other company is able to produce. So Varun Beverages ki ROC and ROE are amazing. Now let's check where are the expenses happening. In comparison, from 2021 to 2024, the sales have doubled. 2,398 crores se they have doubled to 4,805. इन जून, इन गर्मियों में तो ऑटोमेटिकली आप देखिए ज़्यादा होती है हर जगह. गर्मियों में कोक सब पीते हैं भाई, कोक अपना नींबू स्लाइस, ऑल द कोल्ड ड्रिंक्स एंड वाटर गर्मियों में चलता है. तो सेल्स तो आपकी ऑटोमेटिकली जून में ही दिखेगी. सितंबर में थोड़ी कम दिखेगी, दिसंबर वाले क्वार्टर में और कम आएगी, बिकॉज इन विंटर्स नो बडी ड्रिंक्स. कौन दिसंबर में कौन पीता है कोक ज़्यादा, अपार्ट फ्रॉम इफ यू आर मिक्सिंग इट विद समथिंग. एक्सपेंसेस इनके वही रहते हैं जैसे जैसे आपकी सेल होगी वैसे वैसे इनके एक्सपेंसेस है. With 2,300 crore, the expenses were 1,900 crore. With 4,800 crore, the expenses were 3,600 crore. So ये इन लाइन रहता है, जैसे जैसे सेल होगी वैसे वैसे एक्सपेंसेस होते रहेंगे, इसमें कोई चेंज नहीं है. ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए आप, 495 करोड़ था, उसके बाद अभी हो गया 1,150 करोड़, ऑलमोस्ट ट्रिपल. बट इन दिसंबर, प्लीज नोटिस, इन दिसंबर बहुत कम हो जाता है. 208 करोड़ 2021 में, 307 करोड़ 2022 में, 418 करोड़ 2023 में. So for sure, in month of December this year, the sales will be down. Right now, if I'll show you the stock, it's already on reaching all-time high. So I'm not telling you to buy the stock right now. I'm discussing about a particular company. It's your thing. You need to go and check with your financial advisor, study about the stock, and then try and look and think about buying. I'm not saying to buying it now. This is for your future and long-term plannings. ओके. ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स 21%, दिसंबर में गिर जाते हैं, वो आ जाते हैं 12% पे. बट इन समर्स दे आर स्ट्रॉन्ग ऑपरेटिंग मार्जिन, मतलब सीजनल है, 6 7 मंथ दे हैव वेरी स्ट्रॉन्ग ऑपरेटिंग मार्जिन, बिकॉज ये पेरिशेबल आइटम भी है. सो दे हैव टू मेक श्योर दैट ऑल देयर प्रोडक्ट्स आर सोल्ड ऑन टाइम, अदरवाइज वो एक्सपायर भी हो जाता है ना. एंड लॉट ऑफ थिंग्स हैपन व्हेन दे आर मैन्युफैक्चरिंग कोक एज वेल. तो बहुत सारे स्ट्रिक्ट मेजर्स भी होते हैं, लोग चेक करने आते हैं, एंड देन other things happen too. So you have to maintain that. 21% का इनका रहता है रेगुलर समर टाइम में, 25 to 30 के बीच में भी रहा है, आप देखिए जून 24 में. बट इन विंटर्स इट्स गोना गो डाउन. दिसंबर में 12%, मार्च में 19%, फिर बढ़ने लगता है. फिर दिसंबर में 14%, मार्च में 20%, फिर बढ़ने लगता है, फिर दिसंबर में 16%, ऐसे हो रहा है. सो प्रॉब्ली इट वोंट गो डाउन. 18% से नीचे नहीं जाना चाहिए, बट लेट्स सी in December. And net profit after everything, they are making 250 crore per quarter in 21,
Now they have reached to 629 crore in September. जून में आप देखिए वही 1200 करोड़ तक पहुंच जाते हैं. So great number for a quarterly result, guys. Now we'll go down to check their annual result. Annually, the company is making anywhere around 2000 to 3000 crores on an average. But what they were doing in 2012, they were making 25 crores. This is all because of the acquisition and expansion of the company, guys. जैसे जैसे वो बनाते जा रहे हैं अपनी facilities, now they have coming up with four new facilities. The more the facility they'll make, the more production they will do. The more production they will do, more kirana stores they'll reach. The more kirana stores they'll reach, they'll more be able to occupy and capture the end consumer, which is us, and we'll be able to drink it. And Pepsi, on the other hand, the more marketing they'll do than Coke, the more influence we'll get, and we'll drink Coke instead of Diet Coke. And instead of Diet Coke and Coke, we'll drink Pepsi, Diet Pepsi and Coke, Pepsi Zero. I personally like Coke because the other reason, but company wise to buy, I like this company, Pepsi. Okay, now we'll check the chart. All right, look at it. From 2021 till now, company has given 15 times return, guys. 40 रुपए का स्टॉक था 2020 के आसपास, 48 का, which has gone up to as high as 677, almost 15 16 times. From time of listing, the company has given around 26 times return. 26 गुना. I mean, इससे ज़्यादा क्या चाहिए आप लोग को मैजिकल कंपाउंडर्स. Okay, I'm not telling you to buy now. Let's see where to buy. Where is a good area to buy? So, company, this is the moving average, their exponential moving average of 20. And last time when the stock came at the moving average was in November 2020. Since then, it's always respecting its moving average, never trying to cross it. Even अभी जो इतना बढ़िया fall आया, still the stock didn't went below this. Now, what is a good zone to buy? The good zone to buy will be in this area, around 480, 500 zone. This will be a good area to look at it because company is gonna grow. Their expansion plan is coming. The more packaging products will come in India, they will approach already a strong player. जैसे जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज आएगी इंडिया में, वो एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर को ही ढूंढेगी. अभी तो बहुत चीज़ें आनी बाकी है इंडिया में. Lot of recreational drinks, non-alcoholic drinks. Even if you are looking for other kinds of juices, fresh juice, they'll probably contact a well-settled player who have a strong connected area where they can reach their product. तो ये वरुण बेवरेज पास तो बहुत ही अच्छा एडवांटेज है. बट स्टॉक प्राइस अभी एक्सपेंसिव है. पी वैल्यूएशन 77 का, इट्स एक्सपेंसिव. बट वी नीड टू लुक एट इट, कीप अ वॉच एट दिस स्टॉक. इसको अपनी वॉच लिस्ट में डाल के रखिए. And this area when it comes will be a good area to look at it because यहाँ पे जब सी स्टॉक आएगा ये स्टॉक यहाँ से जंप करेगा because it will always respect this अपना 20 day 20, this is monthly, the 20 month exponential moving average, it will always respect. तो जिस एरिया में जैसी स्टॉक आए you can start looking at it and start going slow, 10 pieces, 5 pieces, whatever you can do, 100 pieces, like whatever you can manage. Don't go all in one time. So go slowly, slowly. Okay, I was just checking like किन्होंने लिए रखा है stock, who all the big mutual funds who have started buying in month of September. September में Axis Blue Chip जैसे बड़े म्यूचुअल फंड, ब्लू चिप फंड है. 22,000 करोड़ का मार्केट कैप AUM है एक्चुअली इस एक्सिस का. सो उन्होंने 36,000 करोड़ का हो गया एक्चुअली. लास्ट आई चेक वो 26. म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री इज ग्रोइंग. दे बॉट 19 लाख शेयर्स. एक्सिस कंजम्पशन ने खरीदे 17 लाख, बंधन ने भी खरीदे, कैनरा रुबेको, एडलवाइस ने भी खरीदे, एक्सिस ELS ने भी खरीदे. एक्सिस ने तो हर उसमें फंड में लिए रखे हैं. इंडिया मैन्युफैक्चरिंग में भी लिए बिजनेस. एक्सिस इज वेरी बुलिश ऑन दिस स्टॉक मैन. So keep a watch on the stock. Okay, Varun Beverages was the company which we were talking about today, guys. Once again, and PE इसका जो है अभी फिलहाल चल रहा है अराउंड 78 80 के आसपास,
मीडियन पी इसका 63 का है, सो अभी थोड़ा सा ओवर वैल्यूड है. As I told you, let it come down a little bit. 480 level is a good area to look into the stock, and then we'll discuss about it once the stock reach 480 levels. Until then, I hope you enjoyed this another video from my end, and please like, subscribe, and share with your friends. And I hope you bear with my voice. थोड़ा गला खराब चल रहा है. And enjoy your Diwali, guys. We'll bring another video soon, probably before Diwali if I get time. And thank you once again.